Silent. ग्रामेटिज्म कंप्लीट हो गया था। ठीक, वी आर कमिंग टू द डायग्राम्स। It is proposed by Charles Robert Darwin. It's proposed by Charles Robert Darwin in his famous book. इस book का नाम क्या था? On the Origin of Species. On the origin of species. Right? Darwin highly influenced by Thomas Malthus, who worked on. देखिए, Thomas Malthus actually he is a scientist who worked on the theories of population. Thomas Malthus का जो experiment था, जो work था, theories of population. And he confirmed that there are so many different type of factors are there which regulate the population size of an species in a particular area. What is population? We have discussed the number of individual in an area in a given time is called as a population. तो population का जो increase है, decrease है, size है, distribution है, ratio है, there are so many factors that depends on that. So Darwin का जो Darwinism theory है completely based on the experiment or the that is observation produced by or proposed by the Thomas Malthus. That is why it is highly influenced by which scientist? Thomas Malthus. मैंने आपको previous classes में बोला था कि the site of the Darwin or the working site of Darwin is Galapagos Island and that is what none South America. And the same time, another scientist I have told you, Alfred Russel Wallace, who worked on Malay Archipelago. They have independently worked, but their contribution to the theory of evolution is almost similar. इसलिए मैंने बोला था डार्विन को हम लोग प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं ना, डार्विन वॉलेस थ्योरी. ठीक है ना. डार्विन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था किनका? ना थॉमस माल्थस का. क्या किए थे मैं आपको वन बाय वन बताता हूं. वी आर कमिंग टू डॉक्ट्रिन्स और the postulates of the Darwinism. Number one, geometric increase in population or enormous fertility. Enormous fertility in organisms. ये है नंबर वन. मैं एकदम प्रैक्टिकली आपको एकदम जिस्ट समझा देता हूं. In an organism, the reproduction rate is very high. It is ultimately indicating what? Na high reproduction rate. The reproduction rate in the organism is very high. Means supposed to be one paramecium, for example, will transversely divide into two with few hours, and that two again will convert into four within few hours. Likewise,
within few days or month, the paramecium numbers will be in millions and billions. Just we can go for the street dogs. Ducks, they become sexually matured within 1 to 2 years, and they will produce approximately 6 to 7 puppies at a time. अगर ये 6 to 7 फिर से 1 साल 2 साल के बाद फिर से अगर रेडी हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएंगे, they will produce what? ना 6 into 6. बात को समझ रहे? तो increasing of the population is what? In the arithmetic manner or in the geometric manner? Geometric increase in the population means enormous fertility in the organism, means the rate of reproduction is very high. ठीक? लेकिन अगर second postulate में आएंगे, number 2, we can say the population size is almost similar or almost constant. And ये constant rate of population क्यों है? Now because we can say the competition between them. And the second postulate is limited food and limited space. Because the food is limited, because the space is limited, with respect to the increasing population size, the food is not increasing, the space is not increasing. Because the food and space is always limited. So who are the limiting factor to limit the population size always constant? Now food and space. So these are the two limiting factor to make the population size almost constant. तो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो why the population size is constant? ना because the food and space is limited. तो इस food and space limited होने से population size constant क्यों हो जाता है? Because the third postulate is coming, that is what the struggle for existence. Because the food will be limited, the space will be limited. Must be a struggle between the organism so as to survive in the nature. And there are 3 different type of struggles are there. Intraspecific, interspecific, and extraspecific, or environmental struggle. So what is the meaning of intraspecific struggle? That's a struggle which takes place in between the individual of same species. And the struggle which takes place in between the individual of different species is called as what now? Interspecific struggle, and it is struggle with the environmental factor. जैसे कि रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, समझ में आ रहा है? These are the environmental factors. The organisms are also being struggling with this environmental factor frequently. But nature में ये environmental factor बहुत ही frequently नहीं आता है, but कभी-कभी आता है कि नहीं? So which is the most extensive type of struggle to be found in the nature? Most extensive कौन है? Interspecific. क्यों? अगर आपका रिक्वायरमेंट सेम है तो आपके बीच में स्ट्रगल होगा कि नहीं? अगर X, Y, Z, A, B, C, D all are different species and all the different species have the common requirement, तो क्या होगा? They will coexist or not coexist because they have to face the struggle in between them.
एंड आप जानते हैं नेचर में ऐसे बहुत सारा स्पीसीज है जिनका रिक्वायरमेंट कॉमन, लायन हो गया, टाइगर हो गया, जितने भी कैर्निवरस एनिमल है उनका रिक्वायरमेंट तो कॉमन हो गया ना, दैट इज मीट। एंड सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है प्रे एंड प्रीडेटर के बीच में। प्रे एंड प्रीडेटर आर सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज? ऑब्वियसली डिफरेंट स्पीसीज। तो प्रे एंड प्रीडेटर के बीच में जो स्ट्रगल होता है वो किस में आ जाएगा? यही तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता है नेचर में। ठीक है, द टू डॉग आर फाइटिंग फॉर ए पीस ऑफ मीट, ये क्या है? इंट्रा। तो यहाँ पे एक लॉ आता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब क्या है? मैं लिखा नहीं रहा हूं, खाली सुना रहा हूं। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब कंप्लीट कंपिटिटर्स कैनॉट कोएग्जिस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। बात को समझे? कंप्लीट कंपिटिटर कैनॉट कोएग्जिस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम इन द सेम प्लेस, क्योंकि दोनों क्या कॉम्पिटिटिव है, मतलब दोनों का रिक्वायरमेंट सेम है, तो कभी ना कभी दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। एंड जो फिट है वही सरवाइव करेगा, जो अनफिट है, लेस फिट है, वो एरिया छोड़ के भाग जाएगा, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा या तो डेथ हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो नंबर 4, अब देखिए स्ट्रगल होने के बाद फायदा क्या है ना, जिसका सर्वाइवल हुआ, जो सरवाइव किया, उसके अंदर कुछ चेंजेस आएगा कि नहीं? अभी इधर देख, उधर क्या क्लास चल रहा है? नाउ इट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या है? वेरिएशन मतलब दैट इज चेंज। वेरिएशन का मतलब क्या है ना? चेंज। देखिए चेंज यहाँ पे हम किसको बोल रहे हैं? मतलब सम काइंड ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, सम काइंड ऑफ बेनिफिशियल कैरेक्टर। तो वेरिएशन होगा तभी जाके और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में फिट हो पाएगा। सो डार्विन किस चीज पे ज्यादा एम्फासिस दिए थे? डार्विन सिलेक्टेड द माइक्रो वेरिएशन, मतलब स्मॉल वेरिएशन, ग्रेजुअल वेरिएशन, माइक्रो, ग्रेजुअल, स्लो, कंटिन्यूअस एंड डायरेक्शनल भी दे सकते हैं। तो डार्विन जिस वेरिएशन को एक्सप्लेन किए थे वो था माइक्रो, ग्रेजुअल, स्लो, कंटिन्यूअस एंड डायरेक्शनल। बहुत ही यूनिक चीज है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे म्यूटेशन के साथ। म्यूटेशन पूरा रिवर्स है। म्यूटेशन क्या है? मैक्रो, सडन, फास्ट, वन स्टेप एंड डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डायरेक्शनल, है ना? इसीलिए हम लोग को ये डार्विन का जो वेरिएशन है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि डार्विन किस वेरिएशन के ऊपर एम्फेसिस किए थे। दैट इज डायरेक्शनल, माइक्रो वेरिएशन, स्मॉल एंड ग्रेडेड वेरिएशन। ठीक है, अभी ये जो वेरिएशन बोल रहे हैं कि हमारे नेचर में ये वेरिएशन 3 अलग अलग टाइप का होता है, मोस्टली हार्मफुल, और मे बी न्यूट्रल। मोस्टली ये 2 टाइप, हार्मफुल वेरिएशन हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, एंड यूजफुल वेरिएशन भी हो सकता है। अब ये तीनों में से विच वेरिएशन विल बी मोर एफोर्डेबल विद द नेचर? किसको हम लोग बोलेंगे जिसके पास ये तीनों में से कौन सा वेरिएशन होगा तब इसको बोलेंगे हम दैट इज फिट, यूजफुल। दोज हैविंग,
useful variation are fit with respect to nature. अब इसके बाद आ जाएगा नंबर 5, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब आप बोलिए फिट कौन हुआ? Those having useful variation or those having harmful neutral variation? इसे मैंने लिखा है, those having useful variation are fit with respect to nature. So these fit organism with useful variation will be survive. ठीक है? Fit will survive and will reproduce. बोलिए यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहता है कि जो फिट ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव करेगा, क्या वो उनका रिप्रोडक्शन सेम टाइप होगा कि डिफरेंट टाइप होगा? Will reproduce in the same rate or different rate? सबका रिप्रोडक्शन क्या सेम रेट पे होता है? Human being will produce one offspring or maximum 2 to 3 offspring. That is what? Now that is at a time within 1 year. A dog, a cat, etc., etc. They will produce more than one. The rate of difference reproduction is same or different, and that is called as differential reproduction, a very unique word. So the fit will survive and will reproduce in different rate, and this is called as differential reproduction. बहुत ही important word है. Who introduced the word survival of fittest? Survival word जो use किए थे by Herbert Spencer. He first used the word survival of fittest by Herbert Spencer. एंड इसी चीज को डार्विन किस नाम से दिए? नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है ना? तो नंबर 6, नेचुरल सिलेक्शन. In context of survival of fittest, Darwin used the word natural selection. Number 7, inheritance of useful character. Inheritance of useful character. अब देखिए लामर क्या बोले थे? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. ये क्या बोले? इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल कैरेक्टर. यही है डिफरेंस. ओनली यूजफुल कैरेक्टर. यूजफुल कैरेक्टर किसको बोलेंगे? यूजफुल वेरिएशन को, है कि नहीं? ओनली द यूजफुल कैरेक्टर will inherited to next generation and number 8,
species with the accumulation of or piling of useful variation or character with the accumulation of useful variation or character generation after generation will form the new species. समझे ना? तो डार्विन और लामार्क में बस एक्सप्लेनेशन का डिफरेंस है. लामार्क भी वही बोले थे ना, accumulation of acquired character, piling of the character, generation after generation gives rise to the formation of new species. But ये क्या बोले ना, all the character will not accumulate, but only the useful character will be accumulated generation after generation to form the new species. ठीक है? So ultimately what is the result of evolution? The formation of new species. Now comes to the evidence. Okay. बोलूंगा वेट. सही टाइम पे सही चीज बोलने से आपको समझ में भी आएगा और आप उस चीज को लिंक भी कर पाएंगे. ये कमिंग टू द एविडेंस. एविडेंस क्या है ना? प्रूफ. नंबर 1, इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इनका वीक पॉइंट क्या है. स्ट्रॉन्ग पॉइंट को एविडेंस बोलेंगे, वीक पॉइंट को क्या बोलेंगे ना? क्रिटिसिज्म. स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? नेचुरल सिलेक्शन, है कि नहीं? तो नेचुरल सिलेक्शन का जितने भी एग्जांपल है सारे के सारे एविडेंस पे आ जाएगा. यही एक पॉइंट आप लोग को एग्जाम हॉल में जाके यही सोचना है कि आपको पूछेगा these are the given examples or the some of the what now that is what now we can say experiment or some kind of your evidence or some kind of your that is observation in the nature, which of the following is not related to Darwinian theory of evolution. आपके दिमाग में चलना क्या चाहिए? ये जो दिया है आपको एबीसीडी ऑप्शंस और स्टेटमेंट और जो ऑब्जर्वेशन दिया है तो डार्विन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो डार्विन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन. वीक पॉइंट क्या है? अनेबल टू एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ वेरिएशन. क्योंकि डार्विनियन थ्योरी जब आया था उस टाइम में मेंडेलियन इनहेरिटेंस आया नहीं था. तब तक किसी को नहीं पता था कि जीन क्या है, एलील क्या है. अब अगर वही आ जाता तो डार्विन थ्योरी रिजेक्ट नहीं होता. बात को समझे? तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट. वीक पॉइंट क्या है? नहीं ये क्या बोले, देखिए बहुत ही सिंपल, आप लोगों को दिमाग एकदम स्ट्राइक करना चाहिए सही डायरेक्ट में. ओनली द यूजफुल कैरेक्टर विल बी इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? वेस्टिजियल ऑर्गन क्या यूजफुल कैरेक्टर है? तो वेस्टिजियल ऑर्गन जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपीयर क्यों हो रहा है? ट्राई किया कहां पे डार्विन को वो सपोर्ट किया और कहां पे डार्विन को रिजेक्ट किया, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए. इसीलिए मैंने आपको डॉक्ट्रिन और पोस्टुलेट लिखा है. डेट क्या वो 1830 और 1836 के बीच में, इसके बाद ही हुआ वो ऑब्जर्वेशन डेटा कलेक्ट किए, उसको कंप्रीहेंड किए, उसके बाद ये किए. वो एनसीईआरटी देखिए सब ईयर लिखा हुआ है. और एक काम में आपको बोलने वाला था, घर जाइएगा और देखिएगा आपके एनसीईआरटी के पूरा बायो में, बायो मतलब बॉटनी जूलॉजी, साइंटिस्ट का नेम, डिस्कवरी ईयर, एक लिस्ट बना दीजिए, फायदा होगा. क्वेश्चन आएगा. एनसीईआरटी में कितना दिया है, कौन सा साइंटिस्ट दिया है, क्या डिस्कवरी दिया है, कब वो किए थे.
एक लिस्ट बना के रखिए, फायदा होगा। नंबर 1, 1900 के बीच पहले हुआ। देखो देखो चेक करो। एविडेंस नंबर 1, लॉन्ग नेक एंड फीट ऑफ जिराफ। देखिए क्या हुआ, दिमाग को शांत रखें, दिमाग को पहले शांत रखें। तो कनेक्ट करा बोटानिक ज़ूलॉजी में और साल अब देखिए डार्विन क्या बोल रहे हैं, डार्विन बोल रहे कि पहले जो जिराफ हुआ करता था वो शॉर्ट नेक भी था एंड उनके साथ लॉन्ग नेक भी थे। लामार की तरह ये अंधाधुन ऐसे नहीं बोल दिए, लामार बोले कि सारे के सारे शॉर्ट थे, धीरे 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 उनका स्ट्रेच हो के आज हमारे पास लॉन्ग जिराफ है। और डार्विन बोलते हैं, डार्विन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। ही एक्सप्लेन द जिराफ ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरली, किसे नेचर कैसे सिलेक्ट किया है, शॉर्ट नेक जिराफ एंड लॉन्ग नेक जिराफ। शॉर्ट नेक आर ग्रेजिंग ऑन द ग्राउंड, लॉन्ग नेक आर eating the leaves of the higher branches of the higher tree। दोनों के बीच में कोई कंपटीशन है क्या? तो शॉर्ट नेक जिराफ का कंपटीशन किसके साथ था, ग्रेजिंग एनिमल्स। लॉन्ग नेक जिराफ का किसी के साथ कंपटीशन नहीं था। अब देखिए अभी जैसे धीरे धीरे लामार्क एक चीज सही बोले थे कि उस टाइम में ग्रेजिंग एनिमल का नंबर ज्यादा था, तो ग्रेजिंग एनिमल का नंबर बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया कि जो ग्रासेस था, स्मॉल प्लांट्स था, वो रेयर हो गया। अब शॉर्ट नेक को कंपटीशन ज्यादा हुआ, उसके वजह से शॉर्ट नेक क्या हुआ ना, टोटली एक्सटिंक्ट हो गया अर्थ से। बट बचा कौन, इसीलिए आज जो हम देख रहे हैं वही लॉन्ग नेक आज के डेट में जो है वो पहले से ही थे। नंबर 2, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। हॉर्स का नहीं, हॉर्स का एक्चुअली लामार्किज्म को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चंस आता है। अब ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं लेकिन दूसरे बुक्स में है कि आज के डेट में ऐसे बहुत साइंटिस्ट हैं जो लामार्क को रिजेक्ट नहीं करते। लामार्किज्म थ्योरी इज नॉट प्योरली रिजेक्टेड थ्योरी, इसीलिए लामार्क का कुछ मॉडिफिकेशन भी हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज नियो लामार्किज्म। डार्विन भी रिजेक्टेड है लेकिन डार्विन का एक मॉडिफिकेशन फॉर्म भी है, नियो डार्विनिज्म। नहीं है सिलेबस में, इसीलिए मैं आपके सामने वो सब डिस्कशन नहीं करना चाहता। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हम लोग पढ़े हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट, और जितने भी एग्जांपल्स आएगा अंडर मिमिक्री एंड कैमोफ्लेज। मिमिक्री का मतलब क्या है, to copy others, to that is what now follow others, to make convenient to escape from the prey or predator, to hide from the prey and predator is called as what ना mimicry। and वो mimicry अगर color changing के वजह से होता है then it is called as what ना camouflage। ठीक है, तो mimicry and camouflage interlinked है but not exactly similar। तो ये दोनों नेचुरल सिलेक्शन का एक वे है कि नहीं, अगर कैमोफ्लेज आपके पास है, मिमिक्री आपके पास है, वो कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो वी विल बी मोर फिट विद द नेचर। नाउ वी आर कमिंग टू द क्रिटिसिज्म।
unable to explain causes of variation. Unable to explain the difference between somatic and germinal variation. Number 3, unable to explain appearance of vestigial organ. Tusk in elephant पढ़े हैं? एलिफेंट का जो टस्क है वो क्या है? मॉडिफाइड कैनाइन है। पढ़े हैं? तो कैनाइन का काम क्या होता है ना? टीयरिंग। भाई टस्क से एलिफेंट किस चीज को टीयर करता है? एलिफेंट तो हार्बीवरस है, किसको टीयर करेगा वो तो कैनाइन होता है इन केस ऑफ व्हाट? समझ रहे हैं? प्रॉब्लम होगा कि नहीं? हाँ कैनाइन tusk is modified incision. Not canine. तो modified incision है। तो इंसिजर का काम क्या है? कटिंग। कट करता है क्या टस्क? ये वेस्टिजियल एलिफेंट के केसेस में। अच्छा और एक हम दे सकते हैं unable to explain the wings in flightless bird. फ्लाइटलेस बर्ड्स में विंग्स की क्या जरूरत है? अगर ये फ्लाइटलेस है तो शुड नॉट बी द प्रेजेंस ऑफ विंग्स। और भी बहुत सारा है, बस आप दिमाग लगाइएगा कि ये नेचुरल सिलेक्शन यूजफुल वेरिएशन को कोरिलेट कर रहा है कि नहीं। वो बोलते हैं कि अगर यूजफुल वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन को पास करना है then why the birds unable to fly when they are just newborn? क्योंकि flying is a character for a birds, is a useful character. Thousand example. Ultimately, these are the conditions or factors which are associated with the rejection of what? ना Darwinism. अब Darwinism reject होने के बाद डार्विन और एक थ्योरी प्रपोज की है। Darwin proposed another theory called as ये डार्विन बोलते हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स and all these organs are contributing a small unit particles called as pangene. क्या उसका नाम? And every pangene will be passes through the blood circulation to enter into the gametes. आज के डेट में हम इसको क्या बोलते हैं ना? एलील्स एंड जीन्स। ठीक है? Now he told that कि every gamule or pangene contributed by the every organs of your body will be entered into the gamete, and that gamete has already the information regarding the formation of the organs,
and that will fertilize to form the zygote, and zygote has the every information to form the body. इसलिए ह्यूमन बीइंग ऑफस्प्रिंग बनता है, एलिफेंट का ऑफस्प्रिंग एलिफेंट ही होता है, डॉग का ऑफस्प्रिंग डॉग ही होता है. Why not others like this? ठीक है, and this theory is called as what? Pangenesis theory. Theory of pangenesis. डार्विन को पता नहीं था कि पैंजेनेसिस थ्योरी प्रपोज होने से पहले ही रिजेक्ट हो चुका है. डार्विन को ये नहीं पता था कि ये थ्योरी प्रपोज जब हुआ उससे मेनी इयर्स बिफोर ये थ्योरी ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है. वाइजमैन थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में. वाइजमैन क्या किए थे? कटिंग द टेल ऑफ द रैट. अगर हम टेल काट देंगे तो टेल विल नॉट कंट्रीब्यूट द पेंजीन. तो फिर नेक्स्ट जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका टेल लेस होना चाहिए कि विथ टेल होना चाहिए, बिकॉज द पेंजीन हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम द सेम ऑर्गन एज बिकॉज इट इज ऑलरेडी लॉस्ट. तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में टेल लेस होना चाहिए, लेकिन टेल प्रेजेंट था. हम लोग पढ़े तो अप टू 18th जनरेशन, याद है ना. एंड ये जो रिजेक्शन किए थे वाइजमैन, वो रिजेक्ट कब किए थे ना? 1892 में. वाइजमैन रिजेक्ट कब किए थे? 1892 में. और पैंजेनेसिस थ्योरी प्रपोज कब हुआ? 1968 में. बुक्स थोड़ा निकाल के देखिए तो क्या दिया है. 1868 होगा सर. 1868 है ना? हाँ 1892 रिजेक्ट किए थे वाइजमैन. डार्विन ने 1868, ठीक. तो फिर उसके बाद ही रिजेक्ट हुआ है. उसके बाद ही रिजेक्ट, राइट. 1868 ये लिख लीजिए, ये फिर क्वेश्चन में आएगा. तो क्वेश्चन आता है कि वाइजमैन थ्योरी रिजेक्टेड विच थ्योरी? ऑप्शन में देगा डार्विनियन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनियन थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस, लामार्कियन थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज थ्योरी, एंड फोर्थ ऑप्शन देगा बोथ 2 and 3. क्या होगा? Darwinian theory of natural selection not rejected by the Weismann. It is rejected the pangenesis theory. The next point, which is the two key concept of Darwinism. Right. Two key concept. Number one, natural selection, and second is branching descent. नेचुरल सिलेक्शन क्या इंडिकेट करता है? फिटनेस, है कि नहीं? एंड ब्रांचिंग डिस्टेंस क्या इंडिकेट करता है? कॉमन ऑरिजिन. ये क्वेश्चन में आएगा, टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म. We are coming to the next, mutation theory. Complete.
Mutation theory proposed by based on the observation of plant. इस प्लांट का नाम क्या था? इस प्लांट के को ऑब्जर्व करके एक थ्योरी को प्रपोज किए थे. Poenothera lamerciana, evening primaries. मैं डायरेक्टली इनका कंसेप्ट लिख देता हूं. Mutation arise time to time among the individuals. Of natural population. Number 2, mutation are heritable and forms new species or forms. Mutation are sudden. ये क्या क्या बोले देखिए, म्यूटेशन सडन, लार्ज, मतलब मैक्रो की माइक्रो, मैक्रो, एंड नॉन डायरेक्शनल की डायरेक्शनल. फास्टर. So sudden, large, non-directional and faster. अगर नॉन डायरेक्शनल है तो आप इसको क्या बोलेंगे? रैंडम बोल सकते हैं. डिटर्मिनेंट की इनडिटर्मिनेंट. अगर रैंडम है नॉन डायरेक्शनल तो क्या बोलेंगे उसको? इनडिटर्मिनेंट. एंड यहाँ पे एक वर्ड है जिस वर्ड को याद रखना है, that is called as saltation. Saltation word proposed by Hugo de Vries. Single large step. Single large step. Because ये clearly बोले हैं कि म्यूटेशन किसके वजह से हो रहा है. सेकेंड पॉइंट देखिए, म्यूटेशंस आर हेरिटेबल and that will form what? A new species or new form. And what is mutation? The mutation is a large change, sudden change, random change, faster change. तो अगर एक झटके में एक सिंगल लार्ज स्टेप में एक बिग चेंज होता है तो आप उस चेंज को क्या बोलेंगे? न्यू स्पीसीज बोलेंगे कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू द म्यूटेशन थ्योरी Hugo de Vries, how the new species will form? The new species will be formed in a single step in a large step. A large change in a single step is called as what? The saltation. And इसी वर्ड को हम लोग यूज करते हैं saltatory conduction में. याद आया? Saltatory conduction क्या था? फास्टर था कि स्लो था? जंपिंग था कि वॉकिंग था? हाँ. So we are coming to the next theory, modern theory or synthetic theory. Modern theory or synthetic theory is proposed by Dobzhansky, and G.L. Stebel.
ये सीधा बोलते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोमल एसोसिएशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या क्या वर्ड मैंने बोला? The 5 factors related to formation of new species. And वह 5 फैक्टर क्या क्या है? नंबर 1 म्यूटेशन, नंबर 2 जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नंबर 3 नेचुरल सिलेक्शन, नंबर 4 क्रोमोसोमल एब्रेशन, and number 5 reproductive isolation. So what are the 5 factors which are considered for the formation of new species? The mutation, genetic recombination, natural selection, chromosomal aberration and reproductive isolation. ये 5 फैक्टर से वेरिएशन होगा कि नहीं? एंड वेरिएशन होगा तो धीरे धीरे न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट होगा। इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं कर रहे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाट ना हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में हम इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। It is proposed by G.H. Hardy and W. Winberg. हार्डी थे मैथमेटिशियन एंड विनबर्ग थे फिजिशियन, and he stated that they stated that बहुत इंपॉर्टेंट है, gene frequency and genotype frequency of a population, gene frequency and genotype frequency of a population will remain constant generation after generation. The gene frequency and the genotype frequency of a population will remain constant or unchanged generation after generation. Then the population is said to be at equilibrium. The population equilibrium में तभी होगा only when the population का जो जीन फ्रीक्वेंसी है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है, वो कांस्टेंट और अनचेंज रहे। अगर अनचेंज है then we can say the population is at equilibrium. If the population is at equilibrium, then we can say this population will follow Hardy Weinberg principle.
तो हार्डी-विनबर प्रिंसिपल को कौन सा पॉपुलेशन फॉलो करेगा? दैट पॉपुलेशन इन विच द gene frequency, genotype frequency will remain unchanged. Means the population will be at equilibrium. And what is the meaning of frequency? Frequency आप लोग जानते हैं, occurrence of the timing of occurrence is called as what ना frequency. कितने बार present है वो जीन, कितने बार अपीयर हुआ है उस पॉपुलेशन में, वो जीन का नंबर कितना है. अगर आपको क्वांटिटी पूछेगा, नंबर ऑफ जीन एंड द दैट इज कॉल्ड एज जीन पूल. जीन पूल का डेफिनेशन क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द जीन इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट ना जीन. मतलब क्वांटिटी है कि क्वालिटी है? क्वांटिटी. अगर आपको क्वालिटी पूछा, टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन लाइब्रेरी. जीन पूल अलग चीज है, जीन लाइब्रेरी अलग चीज है. लाइब्रेरी में एक ही बुक 1000 कॉपी में नहीं होता है. वैरायटी. जीन पूल नंबर, जीन लाइब्रेरी वैरायटी. हम लोग फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं. ऑकरेंस ऑफ द जीन इन अ पॉपुलेशन, appearance of the gene in a population is called as frequency, and that frequency will remain constant generation after generation. Then we can say the population is at equilibrium. Then only that will follow what ना हार्डी-विनबर प्रिंसिपल. बहुत ही यूनिक चीज है, खाली आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. Now what are the factor? आप बोलेंगे सर ऐसा क्या क्या फैक्टर है जो वेरिएशन करेगा? Sources of variation. Sources of variation क्या है? Now sources of variation are number 1, gene migration or gene flow. Number 2, genetic recombination. Number 3, mutation. Number 4, genetic drift. Number 5, natural selection. These are the different sources of variation. अब हार्डी-विनबर प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि हार्डी-विनबर प्रिंसिपल में जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी विल बी रिमेन कांस्टेंट, मतलब नो वेरिएशन. तो हार्डी-विनबर प्रिंसिपल will followed by that population in which there is no variation, means there is no evolution, means there is no source of variation, right? देखिए आप लोग ये पॉइंट जल्दी करिए. सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, डोंट वरी. हार्डी-विनबर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम. हार्डी-विनबर population have no variation. No variation means no evolution. क्योंकि हार्डी-विनबर पॉपुलेशन में क्या है ना, जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या है ना, कांस्टेंट. इसीलिए हार्डी-विनबर प्रिंसिपल में वेरिएशन नहीं होगा एंड इवोल्यूशन नहीं होगा. एंड हार्डी-विनबर पॉपुलेशन इस एक्चुअली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है. हार्डी-विनबर प्रिंसिपल को जो पॉपुलेशन एक्चुअली फॉलो करता है, एक्चुअली देयर इज नो पॉपुलेशन व्हिच फॉलो द हार्डी-विनबर प्रिंसिपल. ठीक है, सो नो पॉपुलेशन एग्जिस्टेंस. ये ऐसे कोई भी पॉपुलेशन नहीं है जिसमें वेरिएशन नहीं होता है. अभी मन में सवाल आता होगा कि हार्डी-विनबर प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए क्या क्या कैरेक्टर चाहिए. समझ में आ रहा है कि नहीं?
Hardy-Weinberg population have number one, no migration, no gene migration, और gene flow. मैं सब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में. No genetic recombination, no mutation, no natural selection, and no genetic drift. With ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है. सारे के सारे तो नो हो गया. With random mating. एंड रैंडम मीटिंग कहाँ पे होता है? स्मॉल पॉपुलेशन की लार्ज पॉपुलेशन. यही है सिग्निफिकेंस. अगर आपको लार्ज पॉपुलेशन दे दिया है विथ रैंडम मीटिंग दे दिया है तो विल फॉलो Hardy-Weinberg और नॉट फॉलो Hardy-Weinberg? विल फॉलो. अगर स्मॉल पॉपुलेशन दे दिया विथ नॉन रैंडम मीटिंग, समझे? इसीलिए मैंने ये दिखाया क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हाउ द Hardy-Weinberg principle, although it is not Hardy-Weinberg principle, although it is not applicable to any of the population to be exist in the nature, but why we are using the Hardy-Weinberg principle or not. न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के साथ डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सो थैंक यू.